Welcome to DR show. This is Dr. Tangella Shiva Prasad Reddy alias Dr. TSPR. Namaste, Adab, hello, and a warm welcome to Dr. AMITAV BANERJEE, Bhishma Pitamaha of community medicine, social preventive medicine. Now his need is more predominant now. We are not allowing him to settle down with his family and go around, nor go with the PhDs of his disciples at Pune Medical College. I'm very happy. At the same time, we feel sorry. Why? Because again, the COVID-19 fear crisis as and the media picks up. I have my straight question to all of them. I'm a doctor by profession. All national media, local media, and all those through WhatsApp who are trying to circulate. Do you have any knowledge about disease? And for that matter, pandemic COVID-19. Otherwise, kindly don't forward, because tomorrow you may land into serious troubles. Because already, as he said, Commando Robert F. Kennedy started investigating on what has happened during pandemic, because they were suffering with chronic diseases, which should have been their priority. But instead, they created this pandemic, disease, fear, labeling every death, every case as COVID-19 death, and it has been exposed through postmortem and everywhere. In India, we said, we challenged, is COVID-19 or TB, dengue, malaria, vitamin deficiency disorders, and then accidents keep on occurring. Which are more harmful and dangerous to Indians? They don't debate. And what are those disease deaths which were happening before COVID-19 and after COVID-19? And then what about the vaccination role? We have shown you clearly, those evidences will play. Before vaccination, the number of cases and deaths in India and the world, through Worldometer, Dr. AMITAV BANERJEE has presented it so many a times. That is science, truth, and logic. No one has opposed, including he has presented it at AIMS. I will play that video. And after vaccination, deaths, before vaccination deaths and after vaccination deaths in India and the world. So it is very clear the deaths, how they have happened. Now, as if that is not enough, they are creating this fear to see that the pandemic treaty, that means our health, right to life, are surrendered to World Health Organization, which has been disbanded by United States of America. America said no WHO. It is nothing but propped up the body of China, where there is no science, truth, and logic, and there is no accountability, no transparency, come whatever may. That too, when it comes to health and eating habits, which differ from individual to individual, from area to area, state to state, country to country, then how can you try to have all these nonsensical things? So that is why for India also, many other major disorders which people have been suffering and dying, without understanding and without propping up such, this media supported by the pharmacy mafia, insurance mafia, again started to create this fear of pandemic, so that the governments, again I'm telling you, governments are run by parties, not people of India. Constitution of India means people of India. Right from panchayat to parliament, they don't have any idea about it. So this show is more important. Before I take a word from him, anyhow, I'll take a forward from him, and then I will play 2 videos. Sir, please, what is this nonsense going on? डॉक्टर रेड्डी, ये अभी बहुत ज़रूरी है लोगों को जानकारी देना। अभी आपने तो सोशल मीडिया बोला कि ऐसे पैनिक आ रहा है, मेन स्ट्रीम मीडिया में भी चालू हो गया। न्यूज़ 18, ये 18 अभी खतरनाक मोड़ ले रहा है, कोविड ये ले रहा है, वो ले रहा है। तो ऐसा क्या होने से क्या है कि पैनिक क्रिएट होने से काफ़ी एक मेडिकल स्टैम्पीड हो जाता है, हॉस्पिटल क्राउड हो जाते हैं, उससे दूसरे बीमारियों का इलाज नहीं होता, जो कि हमारी ज़्यादा जानलेवा है। और आज के तारीख में ये जो कोविड का जो स्ट्रेन्स है, एक नॉर्मल जुकाम जैसा है। नॉर्मल जुकाम 1 हफ्ते के अंदर अपने आप ठीक हो जाता है, कोई इसका दवाई ज़रूरत नहीं है। जो प्राइमरी कोमोर्बिडिटी है उसका ट्रीटमेंट हम दे नहीं पा रहे हैं, डायबिटीज़ का ट्रीटमेंट सबको दे नहीं पा रहे हैं, हाइपरटेंशन का ट्रीटमेंट दे नहीं पा रहे हैं, यहाँ तक कि टाइफाइड का भी हम डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट ठीक से नहीं कर रहे हैं। डेंगू और ये हमारा हर साल प्रकोप होता है, अभी बरसात के बाद होगा। तो ये सब हम कवर अप करने के लिए जितने भी अभी डेथ होंगे दूसरे बीमारियों से, अभी आप इतना कॉमन कोल्ड क्यों कहते हैं?
कॉमन है इसलिए कॉमन कोल्ड कहते हैं। और ये कोरोना वायरस कॉमन कोल्ड वायरस है। तो आपको ऐसे जो मौसम आएंगे, जो सीजनल आएंगे, तो 90% पॉपुलेशन के गले में आप आरटीपीसीआर से कोरोना वायरस निकाल सकते हो। तो अगर वो टाइफाइड से देहांत होगा या हाइपरटेंशन से होगा या डायबिटीज से होगा, आप उसको कोविड डेथ में कवर अप कर दोगे। क्योंकि आपकी जो पब्लिक हेल्थ कमियां हैं, आप जो बेसिक कोमोबिडिटीज को ट्रीट नहीं कर पा रहे हो, आप एक पैनिक कराओगे। फिर आपका एक प्रकार का अभी कंबाइंड फ्लू एंड कोविड वैक्सीन भी मार्केट में आने वाला है, तेजी से डेवलप करने की कोशिश कर रहे हैं। तो उसके लिए आप मार्केट क्रिएट करोगे, जिससे कि कोई पैसा डाइवर्ट होगा। फिर टेस्ट किट चालू हो रहे हैं, आरटीपीसीआर फॉर कोविड डायग्नोस्टिक, जीनोम सर्वेलेंस हो रहे हैं। हमारे मेन डिजीज के जीनोम सर्वेलेंस नहीं हो रहे हैं, टीबी का जीनोम सर्वेलेंस नहीं हो रहा है, दूसरे जो डेंगू वायरस है, ये वायरस है जो हमारे जानलेवा है। और एक जुकाम का आप जीनोम सर्वेलेंस करके क्या करोगे। और अभी अभी आज ही न्यूज़ में पढ़ रहा था, आईआईटी इंदौर कोई नया डायग्नोस्टिक किट बना रहा है, क्या, कोविड डायग्नोस करने के लिए। अरे हम्म, कोविड डायग्नोस जब तक होगा तब तक कोविड ठीक हो जाएगा, अगर वो पैनिक नहीं करेगा तो। एक हम्म, जुकाम के लिए आप टेस्ट कर रहे हो। ये कभी टेक्नोलॉजी जो जा रहा है गलत तरह जा रहा है, मिसयूज हो रहा है टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी जुकाम के लिए बनाया क्या आपने? बेशक जीनोम सर्वेलेंस करो, पर टीबी के लिए करो, जिससे कि 1400 लोग डेली हमारे देश में मर जाते हैं, जिनके लिए दवाइयाँ की शॉर्टेज हो गया था पिछले साल। तो ये गलत डायरेक्शन में टेक्नोलॉजी को मिसयूज कर रहे हैं, प्रॉफिट के लिए, हेल्थ के लिए नहीं कर रहे हैं। तो ये मैं इम्पोर्टेंट देना चाहता हूँ। और कुछ हम ग्राफ्स बताएंगे अभी रेड्डी साहब, जो कि मैं कई फोरम में 2 साल 3 साल से बता रहा हूँ। एम्स में भी 1 मार्च को हमको बुलाया था गेस्ट स्पीकर, एम्स न्यू दिल्ली, और नेशनल एकेडमी ऑफ मेडिकल साइंसेज में रिकॉर्ड में है, 1 मार्च को उनके साइट में भी रिकॉर्डिंग होगा। उसमें हमने बताया था कि कंट्री आफ्टर कंट्री वैक्सीन रोल आउट के बाद कोई इम्पैक्ट नहीं हुआ। तो करना क्या है हमको? करना कुछ नहीं है। जुकाम के लिए हम अभी तक क्या करते थे? कुछ नहीं करते थे। तो अभी हम एक जुकाम को इतना इम्पोर्टेंस क्यों दे रहे हैं? वीवीवीआईपी हो गया, वीवीआईपी वायरस हो गया, कि उसके लिए पूरा सिक्योरिटी, वीआईपी के लिए पूरा सिक्योरिटी, इसके लिए सिक्योरिटी। आम आदमी के लिए ना सिक्योरिटी है ना हेल्थ सर्विसेज है, एक वायरस के लिए है। चाहे वो पहलगांव हो, चाहे वो हेल्थ सर्विसेज हो, हमारा वीआईपी को पूरा सिक्योरिटी मिलता है। आम आदमी के लिए ना पुलिस सिक्योरिटी है ना हेल्थ सर्विसेज। आम बीमारियों के लिए, आम बीमारियां गरीब लोगों को हो रहा है हमारे यहाँ, ट्यूबरकुलोसिस हो रहा है, टाइफाइड हो रहा है, डायरिया हो रहा है, डिसेंट्री हो रहा है, 2000 बच्चे रोज मर रहे हैं। ये महामारी नहीं है क्या? तो ये 2000 बच्चे, 2 बच्चे को कोविड पॉजिटिव आ जाता है तो ऐसे चीख चीख के एंकर चिल्लाते हैं कि कोविड अभी बच्चे को भी अफेक्ट कर रहा है, कोविड ये कर रहा है। पर 2000 बच्चे रोज मरते हैं, वो क्यों नहीं चीख चीख के बोलते हैं? प्रिवेंटेबल डिजीज से। या तो I'll just show you some videos जिसको रोका जा सकता है। वैसे काफी जानलेवा नहीं है, जो जिस तरह की हम कहते हैं उसके खिलाफ कोई वार नहीं दे। हाउ इज दैट यू आर नॉट एबल टू prevent such diseases which are not at all harmful and to treat? It will not take much state exchequer, but people will lose lives because of the complications thereafter. So I'm playing this. It clearly states, while you are being scared with COVID pandemic, know this: former Vice President and Chief Scientific Officer at Pfizer, Dr. Mike Yadon. It is there in the public domain. Anyone can go through. There was no pandemic, and the lie was maintained in order to inject 5.5 billion people with an intentionally dangerous substance, 17 million of whom have died so far. That is why I am demanding the common citizens, not only India, entire world. What about the political parties, politicians, administrators, whether it is IAS, IPS, their families, and their immediate subordinates, whether political or administrative? Did they take any vaccine? If they have taken any vaccine, what is that vaccine they have taken? And what is the treatment which was given? How is that they have survived? Common man, they died and they are still dying. Is it not of complications? That is why we said, what does these vaccines contain? What does remdesivir contain? टीका में क्या है, रेमडेसिविर में क्या है, और वो पीसीआर टेस्ट कहां तक सही है, आप इसमें पता कर सकते हैं आप। हाउ वाज द पैंडेमिक इंजीनियर्ड? People were programmed by people like Bill Gates and Anthony Fauci,
Now Modi is attached to Bill Gates, as was UPA through Public Health Foundation of India. 72nd Joint Parliament Committee report on these HPV vaccines injected during Modi as Chief Minister of Gujarat and YS Rajshekar Reddy as Andhra Pradesh Chief Minister. What happened to that report? Why Congress or other parties, including communist parties, why they are not discussing, demanding a probe into that? How many Girijan girls have died? Why there is no case against Bill Gates? How is that he is coming and leaving India without any arrest or without any legal action when unfortunate Indian girls have died during that experiment? The same HPV vaccine is being again promoted by cinema stars. They will all be crucified tomorrow along with Modi government. Congress keeps quiet. People were programmed by Bill Gates and Anthony Fauci, the principal architects of COVID-19. Bill Gates, Anthony Fauci have been challenged by Robert F. Kennedy. It is on record. Mr. Bill Gates, Robert F. Kennedy is on record. He said, come on, dare enough, you come out. He has written books. He has exposed everything. You have a right to come out and challenge Robert F. Kennedy and all shows like us. We are ready to host you, Mr. Bill Gates and Anthony Fauci. And Anthony Fauci, Mumbu Jami, we say, he has gone for preemptive strike, anticipatory bail. Before Biden laid down his office, he has pardoned using his exclusive powers, including his own son. Those who are supporting Biden should be answering this. Why did Fauci seek such type of pardon even before any investigation? That means dal mein kuch kala hai. The objective to inject the global population with vaccines that were ready, but the manufacturers were not willing to market them as they were too dangerous. I am not saying, not Dr. AMITAV Banerjee is saying. This is said by former Vice President and Chief Scientific Officer at Pfizer, Dr. Mike Yedon. It is in the public domain. How was the common cold was chosen as it is very common. Kindly understand, जो जकाम है उसको चुना गया है डराने के लिए. It was easy to manufacture a common cold pandemic क्योंकि जकाम हर सीजन में होता है, हर व्यक्ति के साथ होता है. तो इसको ने इन्होंने ये बनाया, निशाना बना. Even healthy people were declared sick, asymptomatic. The PCR test was chosen. It is not a test at all, but simply a laboratory tool. And it recorded an unenviable 92% false positive, that is 100%. ये देखिए PCR टेस्ट, हम देखा है साउथ अफ्रीका प्रेसिडेंट पपाया लगाया, एक गधा को लगाया, पॉजिटिव आया. और किस तरह 3 अफ्रीकन प्रेसिडेंट्स को मारा गया जब कोविड-19 को, when they have exposed COVID-19, how 3 presidents were killed also on record. Incentives were launched to declare all deaths COVID deaths. Hospitals made a killing. In the US, military doctors revealed that the hospital software had option for only one cause of death, COVID. कितनी बदमाशी देखिए. This is what is the game played by them. They have software to record only deaths as under COVID only, COVID. Even if you die because of TB, dengue, malaria, cancer, or malnutrition, even me and Amitav Banerjee have presented, even accident cases also were recorded under COVID deaths. That is how they have changed the software. All cases of common cold, influenza, pneumonia, asthma, COPD, and even diarrhea became COVID. Even accident deaths were given the COVID diagnosis. During the entire period, influenza cases became 0. What killed people? Today, there is enough scientific evidence to show that the response measures killed. That means when you went to hospital, remdesivir like snake poison was injected. Media generated fear, masking, lockdowns, treatment with powerful antivirals, antibiotics, steroids, ventilators, antipyretics, and vaccines. People walked into hospitals and their dead bodies emerged. People were herded towards the vaccines even as the whole country developed natural immunity. सहज रोग निरोधक शक्ति होने के बाद भी मोदी सरकार ने उनको टीका लेने के लिए मजबूर किया और प्रतिपक्ष चुपचाप. The largest forcible vaccination campaign in history was launched to tackle an imaginary disease. It was made extremely difficult to record any adverse effects, but yet a few people reported that few in the USA turned out to be more than sum total of all vaccine adverse effects ever recorded.
The adverse effects were explained as long COVID. Today, nobody is answerable, even as millions have died and people are still dying. COVID is the biggest big pharma coup in history, and it seems it has not finished yet. While the vaccines were administered to prevent COVID, and the whole world administered up to 8 vaccines per person, Israel itself clearly shown how natural immunity was the best than the acquired immunity by the vaccines. The disease makes a comeback. And the solution: more false testing, more masks, more lockdowns, more treatment, more vaccines. The WHO pandemic treaty is slated to be signed within days. Countries are being coerced by this research to sign on the dotted line. The US has severed ties with the fraud institution called the WHO. India should too. So this is what is all about. And then your comments, sir, before I play your video. एग्जैक्टली अभी सेम थिंग फिर से कर रहे हैं वही। अभी मीडिया जितने भी दूसरे हमारे जो जानलेवा बीमारी है, हमारे यहाँ जितने भी बीमारियाँ होती है, अभी बरसात आ गया है, अभी बरसात के बाद हमारे यहाँ डेंगू डेथ्स होंगे, हमारे यहाँ डायरियल डेथ्स होंगे, हमारे यहाँ लेप्टोस्पायरोसिस डेथ होंगे, स्क्रब टाइफस डेथ होंगे। इसका कोई प्रयोजन नहीं कर रहे हैं जो जानलेवा है। टीबी का भी ड्रग्स का शॉर्टेज था कुछ महीने पहले, और जितने भी डेथ होंगे कोविड आरटीपीसीआर कॉमन कोल्ड है सबके गले से निकल जाएगा और उसको कोविड डेथ करके पैनिक बढ़ाएंगे। और अभी डब्ल्यूएचओ अगर ट्रीटी साइन करता है तो पैंडेमिक ट्रीटी क्यों साइन कर रहा है, हेल्थ ट्रीटी क्यों नहीं साइन कर रहा है? डब्ल्यूएचओ हेल्थ ट्रीटी साइन करना चाहिए, इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन करना चाहता है, बराबर इक्विटी एक ट्रीटी में क्लॉज है। तो हमारे यहाँ बीमारियों के लिए क्यों फंड नहीं दे रहा डब्ल्यूएचओ, जो कि खाली क्या पैंडेमिक के टाइम ही एक्टिव होगा डब्ल्यूएचओ और बाकी टाइम हाथ पे हाथ धर के बैठा रहेगा? हमारे यहाँ जितने डेथ्स आज के तारीख में दूसरे बीमारियों से हो रहे हैं वो 100 गुना ज़्यादा कोविड पैंडेमिक के टाइम भी नहीं हुआ था। चाहे फर्स्ट वेव ले लो चाहे सेकेंड वेव ले लो, वो सब मिला के भी हमारे यहाँ डेली जो 2000 बच्चे मरते हैं, 1500 टीबी के डेथ्स होते हैं, और डेंगू, टाइफाइड, लेप्टोस्पायरोसिस, स्क्रब टाइफस, इनकी तो गिनती नहीं होती है। इनका ना मॉनिटरिंग होता ना सर्विलेंस होता, क्योंकि ये गरीब लोगों को हो रहा है। हाउसिंग सैनिटेशन पुअर है। अभी पानी थोड़ा गिरा, बरसात गिरा, चारों तरफ ड्रेन का पानी, ये पानी हाउसिंग सोसाइटीज में, घरों में, उससे कितनी बीमारियां हो रही होंगी, डेथ्स हो रहे होंगे, उसकी कोई गिनती नहीं है। खाली एक चीज का गिनती हो रहा है, जुकाम का, जिसको कि अभी कोविड का नाम दे दिया है। कॉमन कोल्ड वायरस है, उसी फैमिली में है और उसका उतना ही हल्का बीमारी करता है। तो ये एक प्रकार से एक ही बीमारी को अगर मीडिया सुबह शाम करता है, सुबह शाम उसमें डिस्कशन करता है, तो ये एक प्रकार से मिस इन्फॉर्मेशन है, क्योंकि सेलेक्टिव खाली आप दूसरे बीमारी को नज़रअंदाज कर रहे हो, आप इंफॉर्मेशन, हेल्थ इंफॉर्मेशन छुपा रहे हो और एक बीमारी को ज़्यादा बढ़ा के बोल रहे हो। तो ये एक प्रकार से डिस्टॉर्शन ऑफ फैक्ट्स है। पब्लिक हेल्थ में सभी बीमारियों को बारे में बताना चाहिए, डेथ किससे ज़्यादा हो रहा है उसी हिसाब से पब्लिक हेल्थ प्रायोरिटीज़ होते हैं। हमारे यहाँ पब्लिक हेल्थ प्रायोरिटीज़, कोविड कहीं नहीं आता है प्रायोरिटी में। अगर हम अपनी बीमारियाँ देखेंगे, आप शतरंज खेलते हो तो पूरे जितने भी 16 गोटी, 18 गोटी, जितने गोटी होते हैं 32 गोटी से खेलते हो, आप एक गोटी से नहीं खेलते हो। अभी आप क्या कर रहे हो, हमारे यहाँ जितने बीमारियां हैं शतरंज के गोटियों से भी ज़्यादा हमारे यहाँ बीमारियां हैं। सब गोटी को छोड़ के खाली एक ही गोटी को देख रहे हो, सब जो कि सबसे हल्का गोटी है, एक पैदे को देख रहे हो, और पूरे रिसोर्सेज, पूरा अटेंशन, पूरा पैनिक उसी के चारों तरफ करना एक प्रकार से मिस इन्फॉर्मेशन है, मिसगाइडिंग द पब्लिक। इट इज़ मिसगाइडिंग द पब्लिक एंड कॉजिंग हार्म टू ह्यूमैनिटी, और पैनिक क्रिएट करेंगे और एक्सप्लॉइट करेंगे। टेस्ट किट में भी बहुत प्रॉफिट है, कॉमर्शियल इंटरेस्ट है। इतने टेस्ट किट आप एक बीमारी के लिए कर रहे हैं जिसके लिए कोई स्पेसिफिक ट्रीटमेंट नहीं है, जो सेल्फ लिमिटिंग है और जिसमें कोई मोर्टेलिटी नहीं है। जो वुहान वायरस था, जब सबसे स्ट्रॉन्ग वेरिएंट जो होता है, इनिशियल वेरिएंट होता है, उसका 0.03 से 0.05% मोर्टेलिटी था अप टू 70 ईयर्स ऑफ एज, 69 ईयर्स ऑफ एज। ओमिक्रॉन आने के बाद 10 टाइम्स और कम हो गया मोर्टेलिटी, तो 0.03 और 0.05 के 0.005 हो गया है मोर्टेलिटी। अभी उसके बाद ओमिक्रॉन के जो सब वेरिएंट्स आए हैं जो अभी हल्ला कर रहे हो,
उसके और आप हिसाब लगा सकते हैं, उस ओमिक्रॉन से भी 10 गुना हल्का होगा। और जितना हल्का होगा उतना ज़्यादा लोगों में आप टेस्ट करोगे तो मिलेगा, टेस्ट करोगे तो मिलेगा। तो पैनिक क्रिएट करने के लिए बहुत अच्छा है। पर अभी और डेथ कैसे करोगे आप? डेथ कोई, हमारे यहाँ 25,000 लोग रोज देहांत हो जाता है ड्यू टू डिफरेंट कॉजेस। सबका आरटीपीसीआर करोगे तो 25,000 में डेली 5,000 आप कोविड डेथ दिखा सकते हो। और अगर ऐसे ही चलता रहेगा, जोश चलता रहेगा कि टेस्ट करो, किट में प्रॉफिट होगा, तो सब अस्पताल में सभी पेशेंट को टेस्ट करेंगे, कई डेथ्स होंगे और डेली डेथ रेट भी बढ़ा देंगे। ऐसे में पैनिक बढ़ जाएगा। तो ये बहुत गलत तरीके से मिस इन्फॉर्मेशन हो रहा है। और एक मैं इंपॉर्टेंट चीज़ बोल रहा हूँ, अमेरिका में देखो, अमेरिका से चालू हुआ ये सब मार्केट फोर्सेस। पर अमेरिका में आज के तारीख में इंक्वायरी हो रहा है, आज के तारीख में सीनेट हियरिंग हो रहा है। और जितने कोविड के टाइम जितने लोग थे, ऑफिस बेरर्स थे, पब्लिक हेल्थ पॉलिसी मेकर्स थे, एंथनी फॉची तक को उन्होंने हटा दिया है। पूरा एफडीए में हजारों स्टाफ को उन्होंने हटा दिया है और इंक्वायरी हो रहा है, पुराने डॉक्यूमेंट्स देखे जा रहे हैं। हमारे इंडिया में इंक्वायरी क्यों नहीं हो रहा है? वो जिम्मेदार क्यों नहीं ठहराए जा रहे हैं जो एक्सपर्ट्स? वो भी आज भी आके वो टीवी में स्टेटमेंट दे रहे हैं। दूसरे, उनके अगेंस्ट इंक्वायरी क्यों नहीं हो रहा है? अमेरिका में जैसे इंक्वायरी हो रहा है, हियरिंग क्यों नहीं हो रहा? पार्लियामेंट हियरिंग क्यों नहीं हो रहा? वहाँ तो सीनेट हियरिंग हो रहा है, पार्लियामेंट में जितना स्टेटस है। हमारे यहाँ डेमोक्रेसी है कि खाली नाम के वास्ते डेमोक्रेसी है? Yeah, I'll just play this video. Dennis Rancourt's data shows that the all-cause mortality evidence data did not increase at all in the run-up to the declaration fraudulently by WHO of a pandemic. There is no public health emergency except that created by our governments. A inappropriate, fraudulent PCR test was used to give people the impression that they had a particular disease where they didn't. They were all normal diseases. And then what happened was, in 3 different ways, people were treated badly through changed medical procedures that were imposed above the level of nation. Briefly, mass ventilation of people inappropriately in hospitals that led to lots of deaths. In care homes, many people were given sedatives and respiratory depressants, which led to their deaths. My PhD was specifically in that area of opiates and respiratory depression. And in the community, people were denied life-saving antibiotics and died of bacterial pneumonia. There's your pandemic. There is no other pandemic. And based on this lie, we were told that vaccines were coming our way and would be our savior. 2 things. As I say, first, there's no pandemic, so you certainly don't need an experimental, rushed medical intervention. But secondly, even if you did, as someone who's worked in the industry for over 30 years, I am telling you, it's absolutely impossible to invent, test, clinically evaluate, and manufacture and then launch on global scale a complex biomedical product. It's absolutely impossible. It's not as close, it's years wrong. The fastest record prior to this was 6 years. And friends of mine who've worked all their lives in manufacturing of complex biological products tell me the methods development alone for the development of a reproducible manufacturing process itself takes a number of years. So whatever it is you think was done, I am telling you, there was not the development of a proper medical product. What I think happened was the advancement of materials that are intentionally toxic, and then they were sketchily advanced and jammed into people's arms, often coerced, sometimes even mandated, with the unsurprising effect that millions of people have died. So I think having heard what I've just said, there was no pandemic, and the lie was maintained in order to inject people en masse, I think 5.5 billion people, with an intentionally dangerous substance, 17 million of whom have died so far. Yeah. Then I'll play you a video also, then so that people will understand.
after they rolled out the vaccine. This is Japan. Yes. This is the Make it a bit bigger. So before March 2021, the cases were almost a baseline. After they rolled out the vaccine in March, April, and then May, and now it has got one of the highest vaccination coverage, 79% coverage in Japan, where they don't have any vaccine mandate. They educate the people. They never had lockdown. You see the cases started spiking, then now it is spiking. Either the immunity is coming down. So before vaccine, baseline, after, and then this is the deaths in Japan. So they had high deaths, of course, but after the vaccine also, it's almost symmetrical. I mean, you expect the deaths to come down. If you claim that vaccine prevent deaths, at the population level, you should see the big picture is not, and now the deaths has spiked compared to pre-vaccine era. Tell me, I don't understand. When did they really only roll it out in April? Because in Germany, they started to vaccinate in December 2020. Germany, they started, UK was the first country in December. Yes. It's in Beginning of January, let's we'll say. show the UK figure also. We can show that. Oh, yeah. You want to go? UK also, we are having the similar type. Even This is Singapore. Sorry, I'll make it big. Singapore also, we are having the same. Here is UK, here is Singapore. So what should we look at first? Yeah. UK. I'll make it big. A moment. Here we are. This is the UK. Ah, I see. See, UK, December, they rolled out the vaccine. After vaccine, there is a spike which is higher than the pre-vaccination spike. But again, these are the numbers which These are the are deaths. also a bit falsified as we don't trust. Like, That's- look here, Robert. One thing is there. Yeah. These numbers we don't trust. These numbers also we don't trust. We are using the same methods. Yes, so you can compare. Compare. This is how you think as a scientist. That's epidemiology has to improvise, no? Yeah, exactly. We have to, whatever data is available. Yes, okay. So that is why these comparisons matter more. Yeah. Okay, the same country I'm comparing. Yeah. Earlier you can say that here data, Africa is less, better data in Europe. Here it is, I am comparing UK with UK. Yeah. If they are using one method, the same methods they are using now. And they are having, you see, after the vaccine, the spike, and then again, it may, what happens is that those who are vulnerable who die, they can't die second time. So after that, and then many people, even if it spreads, many people develop natural immunity. Yes. And therefore, it comes down on its own after causing the harm. Mm. And Yes. there are other countries also. I can. So I make it small again. Singapore is also having the same problem. Singapore's here. You see, this is the vaccine rollout. Oh, I see. Okay. 64%. This is the. So here. No, this is USA. USA is also having same problem. Sorry, I was wrong. In fact, I had a panel Yes, with Knut Witkowski of USA. He said these vaccines are not working. He is very blunt. Knut. Who said this? Knut Witkowski. Yeah, sure. I was a couple of panels with him. Yeah. Oh, really? Where was it? Macmillan, Philip Macmillan's panel. Oh, I will send you the links. He's from the Rockefeller Institute in New York City. So, we are German born. Yeah. We are in touch. In fact, we have been on a couple of panels together. 3 panels together. I see. I will send you the links. He's very cool. He has this straight way of straight way, never misses word. And we clicked also. I see. Oh, this is impressive. So you have like no cases beforehand, and then you have a lot of cases. साउंड नहीं आ रहा रेड्डी साहब साउंड नहीं है Need to be mandatory. Doesn't need to be mandatory. Yeah, I see. Wow, this is really impressive. I mean, this is like the most impressive graph. You can see other countries. I have whatever country I have seen. This is USA. USA. See, these are the cases in USA.
And this must One moment, I'll make it small so it's easier to see. this is the cases, this must be the deaths. This was the deaths, this was the cases. I see. Amazing. And this was, I think, this is This is Israel. Sri Lanka. Sri I keep Lanka. track of Sri Yeah. Lanka, neighboring country. Yes, this is See, good. you see, it was almost should- cases were baseline before the vaccine. After the vaccine, cases are surged. Trends. See, these deaths. So I was really surprised at Sri Lanka because every time I used to compare it with India, it was doing so well. So what is the, wait, I have to understand this. Trends of COVID deaths in Sri Lanka. After the vaccine, deaths are more. The same cases are more. These are the cases in Sri Lanka. Cases death. Okay, let's look at the death curve because this is always more important, I would say, because you cannot fake a death. Not so easy, at least. Wow. And whatever limitations in data quality is before same country, before and after the policy. Now So the testing here too. the testing and whatever for deaths as well as for cases. They didn't change the policy. Now I think gradually now they are saying no need to test now because they are finding it embarrassing that so many deaths are occurring. Maybe that reason. So I mean this. And as an epidemiologist, here's the story of you're vaccinated, you're risking more. I mean, population level, as an epidemiologist, I don't see individual, I see population. So I'm not happy with the health of the population after vaccination. I mean, the data is there, or somebody has to explain to me what's happening. Yeah. Whatever to me what's happening. Yeah. Whatever. Yeah, I think this should seal the. So this video is it's an international video. Can you just give the link, sir, as we does always? Amitav Banerjee was with a foreign correspondent and German correspondent, I feel. Please, sir. He is an award-winning German filmmaker, and besides this same data I presented on invitation from to AIMS New Delhi and National Academy of Medical Sciences on 1st March 2024. And I asked because this was a hybrid conference, there were attendants from all over India, experts, and I asked anybody can explain the data to me. I am ready to be know the mystery of this. Why after vaccination, there is a country after country, they have shown spike in cases as well as spike in deaths when they claim the vaccine prevent deaths. Up to now, it is more than 1 year. Nobody has explained to me. I have made an announcement. I would like to be educated on this data. अभी तक ये data मेरे को किसी ने समझाया नहीं है. तो इसका लिंक मैं दे देता हूँ. It is in the public domain. ये वीडियो का मैंने लिंक भेजा है, इसी को आप डाल सकते हैं. एम्स का भी मैं लिंक भेज देता हूँ, जो एम्स में मेरा गेस्ट टॉक था, उसका भी लिंक आपको भेज देता हूँ मैं. Yeah. So now it is very clear how cases increased and deaths increased after COVID-19 vaccination. Now the same fear is they are trying to create to make India to sign that treaty. देखिए, अभी जो नेचुरल वायरस है उसका मोर्टालिटी पहले भी कम था. अगर आप कोई आर्टिफिशियल प्रोडक्ट इंजेक्ट करते हो, उसके साइड इफेक्ट से मोर्टालिटी बढ़ रहा है, इसका मतलब इट इज वेरी क्लियर. एंड देन जब ओमिक्रॉन के बाद तो उससे भी हल्का हो गया है, तो उसको अपने हाल में छोड़ देना चाहिए. एंड यू टेक केयर ऑफ योर अदर पब्लिक हेल्थ प्रॉब्लम्स, योर अदर कोमोबिडिटीज, ट्रीट योर डायबिटीज, ट्रीट योर हाइपरटेंशन, ट्रीट योर डेंगू, ट्रीट योर टाइफॉइड, लेप्टोस्पायरोसिस, स्ट्रेप टाइफाइड, ट्यूबरकुलोसिस. उसको आप ट्रीट करेंगे तो कोविड का जुकाम से कुछ नहीं होगा. अब उसको नेग्लेक्ट करोगे, सबको इसी से डराओगे, तो फिर कुछ आर्टिफिशियल प्रोडक्ट इंजेक्ट करोगे, जबकि नेचुरल जो वायरस है विच इज नॉट कॉजिंग एनी हार्म, इट हैज अडेप्टेड टू द पॉपुलेशन हैज अडेप्टेड टू द वायरस. Why you want to interfere? And even when the initial strains में, और अभी यह हिस्ट्री है, ये 20 साल से ज़्यादा का हिस्ट्री है. कोरोना वायरस का वैक्सीन कई बार एनिमल स्टडीज में ट्राई किया था. They were always unsuccessful to make a vaccine for coronavirus. Why? Because every 3 months it mutates. सबसे रैपिडली म्यूटेटिंग कॉमन कोल्ड वायरस ही होता है, उसको नाम दे दिया कोरोना नोवेल वायरस. तो उससे एक पैनिक क्रिएट किया. और जैसे अभी डॉक्टर माइक हेडन बता रहे थे कि अगर किसी चीज़ को प्रमोट करना है, किसी चीज़ का इंटरवेंशन बनाना है, दवाई वैक्सीन बनाना है, तो ऐसा कि एक बीमारी को पकड़ो जो सेल्फ लिमिटिंग हो. उसका खाली डर, पहले आपको पैनिक से प्रोपेगेंडा करना है कि बड़ा लीतल है, उसके बाद कुछ भी दे दो, गंगा जल भी दे दो, डिस्टिल वाटर भी दे दो,
और उसको खाली नाम दे दो कि ये वैक्सीन है, तो उससे क्या होगा कि सेल्फ लिमिटिंग है। ऐसे बिगर वैक्सीन का भी पेशेंट ठीक हो रहा है, वैक्सीन का भी पेशेंट ठीक होगा। अनफॉर्चुनेटली ये इंग्रेडिएंट से कुछ साइड इफेक्ट्स हो गए, मायोकार्डाइटिस हो गए। अभी जो कल का परसों का हियरिंग था डॉक्टर पीटर मकोलो, सीनेट हियरिंग चल रहा है यूएसए में, वो टॉप लीडिंग कार्डियोलॉजिस्ट है वर्ल्ड के। उन्होंने पूरे थाउजेंड्स ऑफ केसेस उन्होंने हैंडल किया है, और सीनेट हियरिंग में, यूएस सीनेट हियरिंग में उन्होंने बोला कि जब से ये वैक्सीन रोल आउट हुआ 75% केसेज ऑफ मायोकार्डाइटिस ऑटोप्सी में उनके पास है, रिकॉर्ड है, वर ड्यू टू दी mRNA वैक्सीन या स्पाइक प्रोटीन ऑफ अदर वैक्सीन्स। वो जितने भी 75 केसेस जो उन्होंने मायोकार्डाइटिस अपने लाइफ में कभी नहीं देखा वैक्सीन, उन्होंने ये रिकॉर्डेड स्टेटमेंट अंडर ओथ दिया है सीनेट में कि 75 आज के तारीख में 75 केसेस और जो मायोकार्डाइटिस हो रहे हैं, सडन डेथ आप देख रहे हैं, उठ रहे बैठ रहे गिर रहे हैं, दैट इज ड्यू टू द वैक्सीन। ही हैज गिवन दिस स्टेटमेंट ऑन ओथ इन द यूएस सीनेट। हमारे यहाँ ये सब क्यों नहीं हो रहा है? Yeah, now this is what is all about. And under oath in Senate, Dr. McCullough clearly states the deaths are happening just because of these vaccines. And Robert F. Kennedy, America has withdrawn from World Health Organization. Why Modi in the company of Bill Gates? And it is only governments, not people of India. Panchayat to parliament, no public is involved except creating fear through media, their own channels. They are getting funded. And my only request to you, all media personalities, is don't allow things to come to your place. Then you will understand the pain and agony of losing near and dear ones, and because of the side effects of these vaccines, incapacitation. How and what is happening. So now we are very clear from this show that don't panic, don't get into fear mode. There is nothing like COVID-19. The World Health Organization itself said 99.99% it is recovery on its own, and quarantine and all, its original statement you kindly go through. So when such is the case, why is that you are not fearing about TB, malaria, dengue, which are the killing diseases in India, along with huge deaths because of accidents and vitamin deficiencies? Like America, they said our chronic diseases are important than WHO pandemic COVID-19, which is backed by China. China is supporting. Does it speak science, truth, and logic? Then why should India follow World Health Organization backed China and create this fear of COVID-19 to see that all the other issues are in the